हाय। सो BCOS 184 ई कॉमर्स ये कोर्स है BCA 5th सेम का स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम से पहले पूरा बुक पढ़ना और PDF को जो बुक लिए हैं उनको बुक मिला होगा, अदरवाइज जो PDF से पढ़ते हैं तो वो PDF और बुक सेम ही है, जो कि बहुत लॉन्ग वे में लिखा हुआ है और बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। वो पढ़ने का समय है भी नहीं है, भी एग्ज़ाम में पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो। बट आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से पहले डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं जाते हैं, पूरा बुक हमेशा पढ़ते हैं। बुक में जो लिखा है, जितने टॉपिक्स है, जितने हेडिंग्स है, सब कुछ ठीक है। बट पूरा बुक के हिसाब से अगर पढ़ने जाएंगे तो वो प्रॉब्लम होगा और आधा पढ़ के ही छोड़ देंगे। इसलिए हम पूरा बुक को ही शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डेफिनेशन विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, हमेशा हम जितने भी अपने इग्नू का एग्जाम देते हैं सब काम वैसे ही करते हैं, सिंपल वे में। ब्लॉक वन का यूनिट 1 2 3 4 5 जैसे PDF में बुक में है, सेम उसी तरह एक बुक बना लेते हैं। दिस इज माई बुक बट इन अ सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल कनेक्टेड टू दैट, जो कि मुझे एग्ज़ाम में लिखने के लिए मदद करे। और उसके बाद मुझे अगर टाइम मिला तो ही मैं प्रीवियस ईयर में जाती हूँ। तो मेरे जैसे अगर आप लोग भी को लगता है कि हाँ बुक पूरा पढ़ना चाहिए, तो दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर यू। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 1 से। ब्लॉक 1 का यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, जो बुक में है ऐसे सेम टू सेम है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव बता दे रहे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स, अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंटरनेट हैज चेंज हाउ पीपल लिव, कम्युनिकेट एंड डू बिजनेस. With devices like smartphone and laptop, information and products are available instantly. This easy access has transformed traditional business transactions. Earlier, business involved physical shops, face-to-face interaction, manual billing और record keeping, है ना, पहले ऐसे हुआ करता था. Now, all of these activities can done इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग वेबसाइट्स एंड वेब पोर्टल्स. करेक्ट है. रियल लाइफ एग्जांपल कैसे याद रखोगे, देखो, बाइंग क्लोथ्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ विजिटिंग अ शॉपिंग मॉल, है ना, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इंस्टेड ऑफ विजिटिंग मॉल एंड द मार्केट. ठीक है. मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. It refers to buying and selling goods, services and information over the internet. तो ई-कॉमर्स का मतलब क्या हो रहा है? It refers to buying, खरीदना, and selling goods और services and information over the internet. ठीक है? Key points to remember. Product range from daily items like soap, groceries to expensive goods, car, electronics. Services like property booking, second-hand land, and online payment are also included. Types of e-commerce platforms है ना, सॉरी पोर्टल्स, जेनरिक पोर्टल्स और स्पेसिफिक पोर्टल्स आ जाता है. जेनरिक में सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज. सेल स्पेसिफिक पोर्टल्स फोकस ऑन ओनली कैटेगरीज लाइक बिग बास्केट फॉर ग्रोसरीज. स्पेसिफिक पोर्टल मतलब स्पेसिफिक पोर्टल ओनली फॉर द स्पेसिफिक आइटम. लाइक इफ ग्रोसरीज का आइटम है तो यू विल गेट ग्रोसरीज ओनली. एग्जाम्पल फॉर दैट Blinkit will be the good, will be not, that is a good example for a specific portal. Okay. Real life example, ordering groceries from big basket instead of going to the local store. Correct. E-commerce web portals. A web portals is an integrated collection of web pages focused on specific theme. Web portals is an integrated collection of web portals जो होते हैं ना, collections of web pages focused on specific theme. Unlike a normal website, a portal offers सर्च इंजन, पर्सनलाइज लॉगिन, यूजर अकाउंट एंड ईमेल. तो अनलाइक नॉर्मल वेबसाइट, पोर्टल्स हमें क्या ऑफर करता है, सर्च इंजन करता है, लॉगिन करता है, यूजर अकाउंट एंड ईमेल्स, इंटरेक्टिव फीचर्स भी देता है. एंड ई कॉमर्स वेब पोर्टल्स, ठीक है, host products and service details, act as an online shopping platform, allow seller to product options, pricing and services. Real life example, Amazon acting as a single platform for buying different products. देखो ये क्या हो जा रहा है, कल Amazon में अलग अलग सारे आइटम्स मिलेंगे, सारे गुड्स वगैरह मिल जाएंगे. ठीक है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट में हो गया, ग्रोसरीज भी मिलेंगे, फर्नीचर भी मिलेंगे और लाइक क्लॉथिंग भी मिल जाएगा. सो वेब पोर्टल इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम. ठीक है. नेक्स्ट, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर. E-commerce software manages the entire buying and selling cycle
So it supports product search, shopping carts, secure payment, order history, and delivery tracking. For sellers, it helps in managing inventories, processing order, maintaining customer data. Real life example: the shopping cart and payment system used on online website. E-commerce APIs के बारे में क्या बोल रहा है? APIs application programming interface act as a connectors between different e-commerce feature and system. They allow data change between software platforms without manual programming. API act as a connector between different e-commerce feature and system. They allow data exchange between software platform without manual programming. Different type of API like payment API, shipping API, inventory API, order API, and authentication API. Real life example: integrating a payment gateway like UPI and card payment into shipping website. M-commerce and multi-channel commerce. ठीक है. Refer to the e-commerce conducted through mobile application. Refer to the e-commerce conducted through mobile application provides easy access using smartphones. Multi-channel e-commerce, selling through multiple channels like website, mobile app, social media, physical store. Purpose: to interact with customer in multiple ways. Real life example: buying a product via mobile app, Instagram, or physical store. Use of emerging technologies in e-commerce. E-commerce platform use technologies like use of emerging technologies in e-commerce platform use technologies like AI, machine learning, AR, VR, and blockchain. These are the purpose: to provide personalized experience, to improve user UI and UX. ठीक है. Virtual try on clothes or glasses before buying. Why e-commerce? E-commerce is popular because it is economical, easy to use, accessible from anywhere. Benefits क्या क्या है? Buyer can compare price easily, sellers can reach more customer without physical store, reduces travel time and infrastructure cost. रियल लाइफ एग्जांपल: कंपेयरिंग मोबाइल प्राइसेस ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ विजिटिंग मल्टीपल शॉप्स. तो इवैल्यूएशन देखते हैं अभी. इवैल्यूएशन ऑफ ई कॉमर्स 1990 वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस्ड. 1994 पिज्जा हट एंड सोल्ड पिज्जा ऑनलाइन. ओके 1994 से. ठीक है. 1995 eBay फाउंडेड. लेट 1990s .com bubbles burst. आई डोंट नो अबाउट दैट. 2005 में क्या हुआ? टर्म साइबर मंडे. प्रेजेंट में स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया एक्सपेंडेड ई कॉमर्स ग्लोबली. E-commerce has evolved from simple online information sharing the full-fledged digital business model. Real life example: from basic website to mobile app with personalized ads. Types of e-commerce देखो. E-commerce is classified based on the nature's transactions. ठीक है. B2B, business to business. Businesses sells products service to the other business using online portal. Example: manufacturer selling goods to wholesaler online. B2C, business to customer. Business to business में क्या आ जाएगा? Businesses sell product or services to the other business using online platform. Business to customer, businesses sells directly to customer through website और हाँ businesses जैसे Amazon and Flipkart हो गया business to business. Customer to customer में customer sell product to the other customer via online platform जैसे OLX क्यों करना. B2C, business to customer to business. Customer provide goods and services to business. Example: freelancer offering service to companies. Correct. B2G, business to government. Business sells product or services to government agencies. Government e-market ये सब. C2A, customer to administration. Customer interact with government services online, paying electricity bill online. Business to administration. P2P, direct transaction between individual without intermediaries जैसे cryptocurrency transactions. Direct to customer, manufacturer sell directly to the customer without middleman. D2C, direct to customer. Direct to customer, manufacturer sells directly to customer without middleman. Brands like Whatsapp or Dollar Shave Club. These are the example for it. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. एडवांटेजेस क्या हो गया है? फास्टर बाइंग प्रोसेस, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, इजी कस्टमर रिटारगेटिंग, इनकरेजेस इम्पल्स बाइंग,
availability of reviews and details information, affordable digital marketing, 24/7 service availability. Real life example: shopping online without with discounts and home delivery. Disadvantages: lack of personal touch, difficulties in judging product quality, delayed delivery, difficulty in buying customized or precious item, website server crashes, cybercrime and data privacy issue. Real life example: receiving a product that looks different from online images. ओके लेटेस्ट सम भी इसमें बताया जाता है कि क्या क्या किया. ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. इट ऑफर्स कन्वीनियंस, स्पीड एंड कॉस्ट सेविंग. मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल्स exist to shoot different transactions. Despite advantages, issue like security and lack of physical inspection remain. Keywords from this chapter: business dealing with business, business selling to customer, customer selling to business, customer providing services to business, businesses dealing with government, customer interacting with government, peer-to-peer transaction, direct selling from manufacturer to customer. ठीक है, बहुत इजी तरह से ये हो गया पहला हम लोगों का. नेक्स्ट चलते हैं दूसरा. ठीक है, दूसरे वीडियो में देखते हैं इसको.